Now, on the very day Parliament debates Operation Sindoor, Indian Army Special Forces delivered a decisive blow to terror, neutralizing the mastermind behind the Pahalgam attack that claimed 26 lives. The terrorist killed has been identified as Hashim Musa, also known by his alias Suleiman Musa. He was gunned down in a high-stakes encounter under Operation Mahadev, launched deep in the Dachigam forest area of Srinagar. This breakthrough comes after weeks of intense physical and electronic surveillance following the Pahalgam bloodbath. According to top sources, Indian intelligence agencies had picked up telltale signs of encrypted Chinese ultra-radio communication technology after it was used by the Lashkar-e-Taiba to stay off the radar. The same device, referred to as the WYSMS in 2016, was reportedly active once again. Security agencies had been combing the region for the perpetrators of the Pahalgam carnage. Clues led to them to Dachigam, and early Monday, the operation culminated in success. But who was this dreaded terrorist behind the Pahalgam attack? Let's take a look at the manhunt for the main target, Suleiman Musa. Now, former Pakistani Army Special Forces commando, he was expelled from service and later joined Lashkar-e-Taiba. Mastermind of the April 22nd Pahalgam attack that killed 26 civilians, linked to the brutal murder of 7 tunnel workers on the Srinagar-Sonmarg highway earlier this year. He carried a bounty of 20 lakhs on his head. Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah lauded the security forces for the operation, saying that even if just one perpetrator of the Pahalgam attack has been eliminated, it is still a welcome development. जिस दिन से पहलगाम का हमला हुआ 22 अप्रैल से, उस दिन से आज तक हमारे फोर्सेस जो हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे पैरामिलिट्री हो, चाहे आर्मी हो, इनके पीछे हम लगे रहें. अगर आज इनमें से एक भी जो है एनकाउंटर में मारा गया तो अच्छी बात है. The operation is still continue, ठीक है ना. It was an operation which is quite prolonged for a long time, ठीक है ना. That is still continuing, but in which Jammu Kashmir Police, paramilitary and army, they have an exchange of fire in the higher reaches. So as per the interior reports, 3 bodies are being observed and seems to be neutralized. So this is all, but still it is operation. So I would not like to divulge much at this moment. We will share details with you at an opportune time. Meanwhile, families of the Pahalgam attack victims have welcomed the action by security forces and hailed the killing of the mastermind as a step towards justice. शुभम द्विवेदी शहीद का एक रिस्पेक्ट का वो उसको मिलना ही चाहिए. उन 26 लोगों को मिलना ही चाहिए. और उनके परिवार जो ये आज उनके शुभम मेरा ही वॉज माई हस्बैंड, ही वॉज द ओनली सन. उसके जाने के बाद उसकी फैमिली क्या गो थ्रू कर रही है, इवन सिर्फ मेरी फैमिली क्यों, तो 26 फैमिली, हस्बैंड्स आर द होल सोल पर्सन. वो घर में सब कुछ वही होते हैं. जब वो नहीं है तो उनके पीछे उनकी फैमिलीज का क्या हो रहा है, ये आपकी जिम्मेदारी अब बनती है देखना. शहीद का दर्जा दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, उनकी फैमिली के लिए कुछ तो सोचिए. मैं मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूं. उन्होंने मतलब पहले से ही हमारा साथ दिया. उन्होंने हमें मतलब मदद भी की. उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमें जो है मतलब ये मकान बना के भी दिया. और हमारी जो यहाँ की सरकार है उन्होंने भी मदद की. मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर करवाया, वो भी मतलब एक बहुत अच्छा कदम था उनका. उन्होंने बदला लिया, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं. तो आगे भी उनको मतलब ये हम पे नज़र रखनी चाहिए, हमें देखना चाहिए. हमारी सेना का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने ये काम जो है अंजाम दिया. ये गवर्नमेंट की तरफ से हमें एक हमारी जो है आदिल साहब की वाइफ को अपॉइंट भी किया, नौकरी मिली है उनको. और हमें मतलब जो है पैसा वगैरह भी गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, मकान वगैरह भी उन्होंने बना के दिया. नौकरी भी दी है, हमें पैसा भी दिया. और
جو ہے مطلب انہوں نے وعدے بھی ہم سے کیے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ساری مطلب عمر رہیں گے. آل اوور انڈیا سے جو بھی ہے مطلب لوگ ہمارے گھر میں آئے, ہمارے ساتھ تعزیت کی, ہمارے اس غم میں جو ہے شریک ہوئے. میں سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک بار پھر سے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ یہاں پہ ہمارے گھر میں آئے, انہوں نے تعزیت فرمائی ہمارے ساتھ اور مطلب مدد بھی کی انہوں نے. تو میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں.